Good afternoon and welcome to BTV Online. Today we commemorate the martyrdom anniversary of the prominent Baloch leader and powerful tribal chief, the Tiger of Balochistan, Shahid-e-Watan, Nawab Akbar Khan Bukti. In his own words, Nawab Akbar Khan Bukti describes his life saying, "I was born in July 12, 1927 in Haji Kote district of Barakan. My father sent me for an education at Karachi in 1937 to the Major Berg home. Later, I was admitted in Karachi private grammar school, and then from 1940 until 1944, I studied at Chief College Lahore, also known as Atchison College. By the end of 1944, there were rebellions within the tribe. Therefore, I left incomplete my education. After my father's death, I went to Dera Bukti, and at this time the government had recognized me as tribal chief. Since the discovery of the vast natural gas reserves in 1952 at Sui Dera Bukti, the indigenous Bukti tribes and residents of surrounding areas have been completely deprived of the benefits of their homeland's natural wealth. Later, in the 1970s, 3 more natural gas reserves were discovered in Loti, Pirko, and Och. And once more, all 3 plants were operated by the oil and gas development companies, but still Bukti tribes were left out in the cold while their resources were exploited. ये वडेरा शेर मोहम्मद बुक्टी हैं जो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में एक ड्राइवर हैं और सुई शहर के रिहायशी भी हैं। आपके इलाके में जो आपके घर में जो गैस आती है जी जी उसकी क्या हालत है? अच्छी गैस मिलती है आपको? हमें तो अच्छी क्या हमें मिलता ही नहीं है सर। अच्छी का मतलब कैसे? पूरे मुल्क में गैस चल रहा है, हमारे घरों में तो कोई नहीं। जहाँ जो फील्ड से मतलब आधा मील दूर बैठे हुए हैं उधर किसी के घर में चूल्हा जलने आपको नजर नहीं आएगा। और यहाँ लकड़ियाँ नहीं है, यहाँ की जो औरतें हैं वहाँ लकड़ियाँ जला जला के उनके आंखों से अंधे हो गए। अभी तक यहाँ जो है ना इस इलाके में जैसा गैस निकल रहा है, इस इलाके को टी कभी देखो किसी को गैस नहीं दे रहे लोकल को। यहाँ पीपीएल है इतनी हाँ, बड़ी गैस? बड़ा गैस है। पीपीएल बाहर शो कर रहे हैं, मरकज तक इतला दे रहे जी गैस हम दे रहे हैं, बल्कि हमारे घरों में आप चले हर घर में जाए किसी घर में चूल्हा को जला हुआ नजर नहीं आएगा। आप पीपीएल में क्या करते हैं? हम कब पीपीएल में मुलाजिम है, ड्राइवर है, और मैं सबका पहले जनरल सेक्रेटरी भी रहा। और हमारा इनसे एग्रीमेंट भी हुआ था कि हाँ भाई हम अस्पताल लगाएंगे और हम हर घर में गैस भी देंगे। अभी तक ने कोई गैस दिया है, न किसी के घर में पानी का लैंड दिया हुआ है। ऐसे शो कर रहे हैं जी हम लैंड में पानी दे रहे हैं, कुछ चीज नहीं है, ऐसी ढोंग है। हाँ जी आए हमारा लैंड चेक करें जो हमारे लिए गैस का लैंड दिया हुआ। हाँ अभी चलो पहले लगा दो, माचिस भाई को दिखाओ। वाल खोलो भाई, वाल खोलो, इसको लगा दो माचिस। आप आए जी, अभी ठहरे जब मैं आवाज दूंगा फिर मोटर चालू करें, पहले चेक करें। माचिस लगाओ। ये आपका चूल्हा है? चूल्हा तो अंदर है, ये हमारा मिस्त्री मजदूरों का। अच्छा घर तो मेरा अंदर है। हाँ। ये जो हमारा तो जो यहाँ पर गैस का प्रेशर है घर में भी वही होगा? हाँ यही होगा, यही होगा। ये वाल देखो खुला, हाँ खुला। रखो नहीं तो पत्थर के ऊपर रखो, नजर तो है ना। नहीं ऐसे अभी मोटर चालू करें जी, अभी मोटर चालू करें, चलाएं बिल्कुल। अब अभी जाके मोटर चालू करो, मोटर चालू करो। ये मोटर से कैसे गैस आती है? आप आए ना तो मैं आपको दिखाऊंगा, मोटर आपको दिखाएंगे। नहीं है ना इसको प्रेशर जैसा पानी का पंप नहीं है, पानी का पंप की तरह है। उस जैसा पीछे से वो लैंड को खींच रहा है, खींच के फिर थोड़ा बहुत आगे लैंड में देता है, जैसा डुगी पंप जो पानी का है। ये आपको मोटर चलानी पड़ती है? मोटर चलाना पड़ता है, अगर बिजली ना है तो फिर नहीं चलेगा। यहाँ जो मोटर अपना बिजली ना हो तो ये मोटर नहीं चलेगा, तो गैस कोई नहीं है, इसमें प्रेशर ही नहीं है। कभी कभी बिजली भी घंटा आती है फिर 1 घंटा बंद होती है। अभी लैंड दिया हुआ है, ये बाहर जो हमारा ओताक में मजदूर हैं, मेहमान हैं, उनके लिए मैंने दिया। जब घर का लैंड वाल बंद करूंगा तो फिर इसमें गैस आएगा। जब ये पकाएंगे फिर मैं अंदर अपने घर की तरफ ले जाऊंगा, वो भी मोटर के जरिए। तो इस मोटर को चलाते हैं आप? जी हाँ, इसी पे चलाते हैं। और बिजली कब तक आती है? बिजली भी इस बड़ा इनाम है। ये इतने पुराने मुझको जो ये खंभे नजर आ रहे हैं, ये जो एंटीना नजर आ रहे हैं जी जी टीवी के, जी जी, ये तो बहुत पुराने हैं। यहाँ पे कोई केबल वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं है? नहीं है सर।
तो आप लोग क्या सिर्फ इसी एंटीना पे टीवी देखते हैं? बस मजबूरी से ये देखना पड़ता है। और इसके अलावा आप लोगों के पास यहाँ पर मोबाइल वगैरह ऐसी कोई चीजें? नहीं, मोबाइल तो इधर है ही नहीं, इधर सिस्टम ही नहीं है मोबाइल का। तो कैसे करते हैं आप लोग टेलीफोन वगैरह? मजबूरी से अपने इलाके में पड़े हुए हैं, गुजारा तो करना है। मतलब पीटीसीएल की कोई लाइन वगैरह है आपके हाँ, पास? पीटीसीएल का लाइन है, वो मिलती है लाइन? वो लाइन मिलता है। यहाँ के लोग जो ना ज्यादा जोर दे रहे हैं पानी और गैस और बिजली, ज्यादा इस इलाके में तकलीफ ये है। अभी इस साल में कई दफा यहाँ औरतों का डेथ होता है, कोई सर्जरी का सिस्टम नहीं है कि भाई बच्चे का तकलीफ हुआ तो जाते होते वो औरत मर जाता है या बच्चा मर जाता है। आप लोग के यहाँ कोई सिविल अस्पताल नहीं है? नहीं, इधर सिविल अस्पताल मतलब बड़ा नाम है, ना होने के बराबर है। सिविल अस्पताल में क्या है, मतलब उसमें अगर डॉक्टर तनख्वाह ले रहे तो उसमें दवाई नहीं है, पूरा गवर्नमेंट कोई दवाई नहीं दे रहा है। कोई स्टाफ है तनख्वाह लेके जा रहे हैं, मगर वो 3 आदमी है या 4 है, उनका घर तो आबाद हो रहे, बाकी हजारों के बंदे को जान चला जाता है। यहाँ मतलब कोई वो नहीं है अस्पताल में बंदोबस्त। जी आप क्या कह रहे थे? जी इधर हमारे जो फील्ड है, बड़े 4 फील्ड हैं, बड़े बड़े सुई है, दूसरा नंबर पीर को, तीसरा नंबर जे लोटी, चौथा उच्च। हमारे एक जिला में 4 बड़े फील्ड हैं। तो वहाँ पे जो शहर हैं, क्या उनकी हालत भी सुई जैसी है? मतलब लोगों की जो है कि वहाँ पर भी गैस नहीं है? नहीं जनाब, इधर सुई में कहीं कहीं जगह में दे रहे हैं, उधर तो वो भी नहीं है। आप जाके चेक करें, इस हालत से बुरा है। Many observers were skeptical that Nawab Akbar Khan Bukti could make a strong deal or agreement during his 5 decades in the state's political arena for the Sui natural gas projects, which would benefit the entire tribe in terms of infrastructure and developments for the Dera Bukti area. ये हुकूमत है, हम प्रोपेगेंडा यक कि हमेशा के तरक्की पसंद ने तरक्की के खिलाफ हैं, तो बस है तरक्की न लोटी, हर कस तरक्की लोटी, हर का बेहतरी लोटी, हर को खुशहाली लोटी, कस न लोटी की लंगन भी और वजनस भी और तुमी भी है। मिसाल तौरा मैं इलाका है कि मैं चका इल्जाम है कि मैं तरक्की न लौटूं, मैं करीब 4 सब प्राइमरी स्कूल और 20 हाई स्कूल इंटर कॉलेज ये हमारा इलाका है कि हम तरक्की न लौटूं। ये हमार टीचर बात कम ज्वाइंट टीचर नियंत मैं दफ्तर नियंत, बाकी ये हर चीज के स्कूल और कॉलेज वगैरह हैसियत को माँ जमीन मुख्तद अस्पताल वास्ता, कॉलेज वास्ता, वाटर वर्क्स और दुनिया हर चीज के अवाम में बेहतरी है। हम ये माँ वक्त हम जमीन दासा कुल शह दासा ताकि सहूलत भी। अलबत्ता हुकूमत गोशी के सरदार पे न लोटत मकराना तो सरदार नेचते हैं, हम सरदारी निजाम नेचते हैं। माँ नहीं सक मकराना बेन गए और शीर नहर हमारा बायात शहद नहरन न शीर नहरा बदहाल मखलूक आस वर्गे नेचते हैं, अजमाश बाज पस्तन। तो एक हमारा इलाका है कि गुस्सा सरदारी नए तो ज्यादा तरक्कियां कर के तरक्की हमारे के अवाम लोटी, हमारे के अवाम गजर भी, हमारे के अवाम जरूरत भी। ये न कि तरक्की हमारी है कि गवर्नमेंट जोर में गुटर जाला हम जोरा का ठोसी बिली, हमारे गुस्से की छावनी तहांत, एयरफील्ड तहांत, हेलीपैड तहांत, मिलिट्री रोड तहांत, इतना न लोटो इतना कब्जा करने और जनया खुशा खातरा हमारे के अवाम जरूरत अवाम गजर है, हम ही हटाने में बिल्कुल वेलकम करूँ। Nawab Akbar Khan Bukti had welcomed Qaid-e-Azam upon his arrival in Quetta in 1947, and during the referendum, he said that he had voted in favor of Pakistan. He said that we were asked, do we want to join Pakistan or India? Besides these 2 questions, there were no other options, so we did not have a choice. If they had asked us to join an independent state of Kalat, then it would be a completely different story. That was our first step into political involvement, but later realized how Baloch were treated and how Pakistan army used force against the state of Kalat. Nawab Akbar Bukti said, I never took oath of loyalty with Pakistan. I'll be loyal to my country, and my country is Balochistan.
Only later did Nawab Akbar Khan Bukti and other leaders of the time realize the extent of the social inequality between the Baloch and Punjabis. He said that Baloch expected Punjabis to share Baloch values, and they would return the Baloch favors. If the Baloch knew at the time their nation would be enslaved by Pakistan, Nawab Akbar Khan Bukti said his decision would have been quite different. At the time, Nawab Akbar Khan Bukti was in favor of peaceful means of struggle for the greater autonomy, and sought to achieve this goal without incurring military action in Balochistan. Unfortunately, despite his most sincere efforts, Pakistan was determined to enforce an oppressive occupation of Balochistan with full military force. Colonists or the colonial authority of the people or the nation in authority, they use their force, the force of the state, to beat them down and keep them down. Likewise in Balochistan, it is after 1971, Bangladesh separated, or was made to separate. All the three provinces in Pakistan, if you combine them together, they are still a minority. Punjab is a permanent majority. They know it and we also know it. So here the tug of war starts because they have a permanent majority and they would like to impose their majority rule. Everybody wishes to be free and sovereign. अपने कारोबार का, अपने क्या का खुद वो आका होना चाहता है. To do as he thinks is right or fit. Nobody likes to be a slave. Similarly, Sheikh Mubar Rahman peacefully demanded greater autonomy for Bengalis, and even then the Pakistan Army responded with a full-scale genocide. The outcome of Pakistan Army's inhuman treatment of Bengalis was the rapid growth of a strong, well-organized resistance movement who in 1971 defeated the Pakistan Army and liberated their homeland. দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আজ তার অধিকার চায়। 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে 10 বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। 1967 সালে 6 দফার আন্দোলনে 7ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। 1969 সালে আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তিনি বললেন পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসাবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন, আমি বললাম যে আমি যাব। ভুট্টো সাহেব বললেন তিনি যাবেন না। 35 জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে এখানে আসলেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করে দেওয়ার পরে দেশের মানুষ প্রতিবাদ মুখর হয়ে আসলো। আমি বললাম শান্তিপূর্ণ ভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম আপনারা কল কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল, আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তারা শান্তিপূর্ণ ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কি পেলাম আমরা? আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রু আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব দুঃখিনী অস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে, তার বুকের উপরে হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু,
আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি, যখনই এদেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আমি পরিষ্কার মিটিংয়ে বলেছি যে এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। 7 কোটি মানুষকে তাবা রাখতে পারবো না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দবাতে পারবে না। যদিও আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সলা করতে পারি, তাহলে অন্তপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে। সেই জন্য আপনাদের অনুরোধ করছি, আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা করবেন না। Nawab Akbar Khan Bukti served in a number of different positions during his 5 decades of political career. In the 1950s, Nawab Akbar Khan Bukti served in Prime Minister of Pakistan Feroz Khan Noon's cabinet as Deputy Minister. He then joined the Republican Party, and in 1958 he became the Interior Minister of State. A year later, in 1959, Nawab Akbar Khan Bukti was arrested for involvement in a murder case and was sent to jail to await execution. Eventually, his execution sentence was lifted and replaced with a lifetime term in jail. But in 1961, he was finally released. Although Nawab Akbar Khan Bukti was in prison for 8 years, he never compromised his principles. In February of 1973, Akbar Khan Bukti was elected as Governor of Balochistan. During his short term in office, Akbar Khan Bukti made the advocacy of Baloch self-determination his highest priority. He demanded the Pakistan government agree to a policy of non-interference in internal Baloch politics. 8 months after Akbar Khan Bukti was appointed governor of Balochistan, the Pakistani military began a ruthless crackdown in Balochistan. When the federal government refused to cease military aggression towards Baloch citizens, in November 1973, Nawab Akbar Khan Bukti held a press conference in Quetta. During his press conference, he said, "In Karachi, police raided Sardar Atullah Mengal's house without my knowledge, which is unacceptable for me." He further stated that, regardless of our differences, his house is like mine, and such a police raid was against Baluchi code and value. The next day, Baloch journalist Anwar Sajidi published a statement from Nawab Akbar Khan Bukti announcing his resignation from public office. Akbar Khan Bukti resigned his post as governor on December 31, 1973. Nawab Akbar Khan Bukti returned to his political career in the late 1980s and was elected to the Balochistan National Assembly on 3 occasions. In June of 1992, Akbar Khan Bukti's son, Salal Bukti, was assassinated on Jinnah Road by target killers in Quetta. After the brutal killing of his son, Nawab Akbar Khan Bukti left the political arena and returned to his native Dera Bukti. Regarding the murder of his son, Salal Bukti, Nawab Akbar Khan Bukti said that, "All children are loved by their parents. When Rihan died, I also felt pain. But Salal Bukti's death was much stronger because he was killed with no reason. He was innocent. He was young, he had no hatred and contradiction with anyone. After his death, I found my life a bit different. I decided now I will spend my time in Dera Bukti." In the 1990s, a well-known South Asian American expert and former journalist, Mr. Selig Harrison, conducted an in-depth research project about Balochistan. In his report, he said that the former U.S. ambassador to Pakistan, Robert Oakley, had informed the U.S. Congress about the importance of Balochistan in Central Asia and Middle East. Robert Oakley was a very close friend of the Nawab Akbar Khan Bukti. He visited his hometown in Dera Bukti and also visited all strategic locations of Balochistan. During his time as ambassador, Robert Oakley observed very closely all of these areas, including Balochistan's coastal regions and its strategic locations. Soon after the 1999 coup by General Pervez Musharraf, the National Assembly was dissolved. It was then that Nawab Akbar Khan Bukti began to take part in the Balochistan liberation movement. During this time, Mir Baloch Mari had become very close with him. His change of mind from struggle for autonomy within Pakistan's failed system to leading the Baloch struggle for complete independence brought a wave of change in the struggle for national liberation, especially among Baloch youth. In 2005, a female doctor, Dr. Shazia Khalid, was violently raped by a Pakistan Army Defense Security captain at a military base near Sui. Although Dr. Shazia Khalid was a non-Baloch migrant worker,
The Darabukti chieftain Nawab Akbar Khan Bukti demanded justice for the victim, but President Musharraf refused to pursue a case against the implicated officer. Nawab Akbar Khan Bukti and his tribe expressed an intense reaction, which quickly escalated into direct armed conflict. Musharraf made his intentions very clear when he launched a full-scale military assault in Darabukti in March 2005, bombarding Nawab Akbar Khan Bukti's hometown. हुकूमत में सरा जंग मुसल्लत खुदा और हर असला हर हथियार के यार अस्ते हमारे लिए इस्तेमाल करने मजाएं जीड मारे तोप हमारे कारगिला इस्तेमाल भी ऐसा 155 मिलीमीटर 80 मीलानी रेंज है हमारे इस्तेमाल भी हम हर किसी तरह Carrying him, Janet Bagger and Kavas, Harksad Janet. Good jet fighters, the bombarding current, strafing current, gunship helicopters, indiscriminate bombardment करें बगैर इम्तियाज हर वटा चप्पा रास्ता हल्का और बाज़ मखलूक शहीद भी सियत हमारी अक्सरियत भारी अक्सरियत के हस्ते हैं कुल जनात और चुकंत जायफा और चुक सरदार कमरा Heavy bombardment from gunship helicopters, artillery, and mortar rounds had reduced the entire area to little more than smoldering ruins. Many local homes, shops, schools, and even places of worship were completely destroyed in the attack. March 17th, during a full-scale bombardment, 70 innocent Bukti villagers, including women and children, were killed in the massacre. The majority of them were local Hindu minority. Considering the home of Nawab Akbar Khan Buktis was among those destroyed, there was no doubt the state intended to eliminate Nawab Akbar Khan Bukti. After witnessing Pakistan's numerous betrayals, inhuman behavior, and indiscriminate massacre of the people in Darabukti, the then 79-year-old Nawab Akbar Khan Bukti could no longer bear to witness the suffering of his people. After 5 decades of peaceful attempts to resolve the rights of the Baloch nation, Nawab Akbar Khan Bukti sacrificed everything he held dear and bravely ventured into the mountains to take up arms against the tyrannical Pakistani state. In August of 2006, the Pakistan Armed Forces launched a full-scale military operation to once and for all eliminate Nawab Akbar Khan Bukti. With gunship helicopters, mortars, and fighter jets, the Pakistan Army relentlessly bombarded the mountain range. Pinned down under heavy bombardment deep in the Tatni Mountains, Nawab Akbar Khan Bukti and 32 of his heroic comrades embraced martyrdom on August 26th of 2006. When Pakistan Army generals assassinated a vital Baloch politician, former governor, and chief minister of Balochistan, Nawab Akbar Khan Bukti, they deliberately sanctioned a policy of violence in the province that is fast growing to a point of no return. Nawab Akbar Khan Bukti actively advocated for Baloch entitlements and self-determination for more than 5 decades in the Pakistani parliamentarian system. After all this time and experience within the Pakistani regime, Nawab Akbar Khan Bukti came to the unfortunate conclusion that an establishment ethnically dominated by Punjabi was completely untrustworthy. Therefore, the Baloch nation could no longer waste a single moment of time expecting rights and justice within the corrupt and prejudicial system of Pakistan. Lawrence Zerig, a professor and director of the Institute of Government and Politics in Western Michigan University, conducted extensive research about the state of Pakistan. He wrote that Pakistani political life is consumed by the forces of necessity, not by the promise of democratic development. He further described the Pakistan government as a civil-military bureaucracy formed as a consequence of the colonial era. Despite violent state persecution and perpetual injustice, Nawab Akbar Khan Bukti dared to stand up for Baloch rights and challenge Pakistan's inhuman policies.
Nawab Akbar Khan Bukti spent most of his life in pursuit of peaceful means to achieve liberty and freedom for the Baloch, exhausting every possible avenue of reasonable negotiation within the occupational state system. Although his efforts within the occupier state parliament had proved ineffective, he did, however, reveal to us that behind the multitudes of incompetent, corrupt state officials, the iron fist of the Pakistan Army is and always has been the true authority. Nawab Akbar Khan Bukti said that, "I love my own homeland, Balochistan. My nucleus is only Balochistan. I am proud as Baloch. However, other people see Baloch as illiterate, backward, but in my opinion, Baloch tradition is their code of honor. True to their words, hospitality, and other traditions are the best. My personal observation is those who gave up their mother language. I think within them some differences has occurred. However, Baloch and Balochi are necessary for each other. If we look, Baloch homeland, it is in danger. Baloch national identity is in risk. Baloch are not equal citizens. Baloch resources are in the hand of the central government, and just for survival, Baloch are given peanuts, like a donation." Nawab Akbar Khan Bukti's life experiences and martyrdom has exposed the Pakistani occupier state's sinister ambitions in Balochistan and illustrated the violent extremes they are willing to go to enforce their oppressive, exploitative policies. Ever since the occupier state resumed military operations against the Baloch in 2005, the Pakistan Army atrocities have steadily continued to escalate in severity and frequency. Today, the Pakistan Army is repeating the sinister tactics they employed in Bangladesh: constant indiscriminate bombardment and burning of Baloch villages day and night to enforce an illegitimate occupation of a highly strategic and resource-rich region. The occupier state forces, with their proxy extremist gangs and mercenary death squads, are more determined than ever to render Balochistan the world's largest cemetery, where the mutilated bodies of abducted Baloch are left scattered throughout the countryside. Meanwhile, the corrupt regional state administration's sycophant parliamentarians endeavor to reap as much personal, political, and financial gain as possible, entirely at the expense of the common Baloch people. Nawab Akbar Khan Bukti was a dedicated student, teacher, and brilliant intellect. He lived his life by traditional Baloch values and is described by all who knew him as generous, thoughtful, strong, bold, and upright. Nawab Akbar Khan Bukti was determined to stand up for the common Baloch people of all faiths, backgrounds, and walks of life. Despite overwhelming adversity, he firmly stood his ground and never compromised his principles. Although the occupier state ended his physical existence in this world, the spirit and essence of Shahid-e-Watan Nawab Akbar Khan Bukti continues to live on even today within the hearts and minds of every kindred spirit, growing with every moment and inspiring each and every one of us to continue the struggle for freedom and to preserve the Baloch national identity and protect the homeland. Shahid-e-Watan Nawab Akbar Khan Bukti said, "Let us, before we die, gather up our heritage and offer it to our children." This has been Sean Forbes, and thank you for watching.